Assalamu alaikum. Now we are moving towards the keynote session 1 and I'll be moderating this session. To start off with this session, keynote speaker 1, I would like the chairs to kindly come on stage. For first, I would like to invite Dr. Ashok, Dean Surgery and Allied, to come forward on stage. Second, I would like to invite Professor Dr. Sugra Parveen. Madam is Clinical Director at Civil Hospital, Thatta. Madam is also the head of the Department, General Surgery at Liaquat Institute of Medical Health Sciences, Thatta. Thank you so much. Now, we would like to invite our first speaker for today, and that is Professor Dr. Abdul Wase. Sir is a distinguished consultant neurologist and professor at Neurology Department of Medicine, Khan University, Pakistan. His excellence in teaching and advocacy has been acknowledged with the Teachers Recognition Award and Advocacy Leader of the Award by the American Academy of Neurology. Sir has multiple honors from the Pakistan Academy of Medical Sciences and Pakistan Society of Neurology. Sir has more than 300 publications and he has supervised more than 55 FCPS neurology candidates. Sir is the chief editorial for Pakistan Journal of Neurology Sciences, and Sir has supervised more than 100 FCPS and PhD neurology students. May I request Sir to come on podium for his beautiful words. Screen. अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो चीज़ें मैं आपसे चाहता हूँ। पहली बात तो बातें नहीं करें आपस में, मोबाइल बंद कर दें। तीसरी बात यह है कि वी हैव ओनली 20-25 मिनट्स, लेकिन आई वांट टू टेल यू जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस है मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन रिलेटेड रिसर्च का, वो मैं आपको कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो उसमें मुझे आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। ये हमारा आज का टॉपिक है, रिसर्च फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, व्हाई, व्हेन एंड हाउ। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि जिस तरह यहाँ पे आज लियाकत यूनिवर्सिटी ने इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स को जमा किया है, और दूसरा आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि जो हमारी स्टूडेंट्स की मोटिवेशन है, हमारे जो पाकिस्तान के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, इनका जो इंटेलेक्ट का लेवल है वो दुनिया में किसी भी स्टूडेंट से ज़्यादा अच्छा है। और अगर वाकई ये हम अपना काम करें जिस तरह के स्टूडेंट्स को करना चाहिए, तो हम न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया में मेडिकल रिसर्च के अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी नो डिस्क्लेमर फॉर दिस प्रेजेंटेशन, सो दिस हैज़ नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये ऐसी फीलिंग आती है जब हम अपने स्टूडेंट्स को रिसर्च करने का कहते हैं ना, तो वो कहते हैं कि सर ऑलरेडी हमने इतना तो कर लिया है, मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया है, अभी हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं, अभी यू आर ऑलरेडी ऑन टॉप, अभी हम इसके बाद और क्या करें। तो एक्चुअली क्या है कि दुनिया में हर टॉप के आगे एक और टॉप होती है ना। तो अगर आप पहाड़ी की चोटी पे भी बैठे हुए होंगे तो उसके ऊपर भी एक जगह होती है जो आपको जाने की होती है और जिसको आपको जाने की कोशिश करनी चाहिए। अब मेडिकल स्टूडेंट्स को रिसर्च क्यों करनी चाहिए, दैट्स क्वेश्चन नंबर 1। आप कहते हैं भाई हम डॉक्टर तो बनने जा रहे हैं, हम प्रैक्टिस करेंगे, हमें मेडिकल एजुकेशन में रिसर्च करने की ज़रूरत क्या है। तो पहली बात तो ये है कि जिस तरह तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स को क्लिनिकल स्किल सीखनी होती हैं, आपको पता होना चाहिए कि मरीज़ को एग्जामिन कैसे करते हैं, हिस्ट्री कैसे लेते हैं, ये आपको आना चाहिए, इसको हम कहते हैं क्लिनिकल स्किल्स। इसी तरह आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए कि आपको मरीज़ से बात कैसे करनी है, फैमिली से बात कैसे करनी है, क्या सवाल पूछने हैं, क्या उनको बताना है। इसी तरह आपको प्रोसीजरल स्किल्स आनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि भाई लंबर पंक्चर कैसे करते हैं, रिफ्लेक्सेस कैसे चेक करते हैं, फंडस कैसे चेक करते हैं। जिस तरह ये स्किल्स आनी ज़रूरी हैं, इसी तरह तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स को रिसर्च स्किल्स आनी ज़रूरी हैं। आपकी मेडिकल एजुकेशन इज़ नॉट कंप्लीट। अगर आप भले से डॉक्टर बन भी जाएं, लेकिन अगर आपको रिसर्च स्किल्स नहीं आती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अभी मेडिकल एजुकेशन कंप्लीट नहीं है। तो पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन का ये है कि आपको इन तमाम स्किल्स के साथ साथ आपको रिसर्च स्किल्स आनी चाहिए और रिसर्च स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि काफ़ी दुनिया में ना लोग मेडिकल स्टूडेंट्स वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अपने AKU का बताता हूं, हमारे पास सारे स्टूडेंट्स यानी 100%, ये नहीं कि 90%,
100% स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो मेडिकल कॉलेज कंप्लीट करने से पहले पहले पेपर्स पब्लिश कर चुके हैं, और बहुत सारे तो ऐसे हैं जिन्होंने 30-40 पेपर पब्लिश कर लिए हैं ड्यूरिंग अपने मेडिकल कॉलेज के दौरान ना, यानी उन्होंने इतना काम किया हुआ इसके अंदर। तो इसलिए तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स को अभी हम इस पर बात करेंगे कि जब तक आप मेडिकल कॉलेज अपना क्लियर करें, जब तक आपके 2-4 पेपर आपके पब्लिश होने चाहिए, और वो हम आपको बताएंगे आपको किस तरह करने। पूरी दुनिया में तकरीबन 35 to 40% स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो मेडिकल कॉलेज के अंदर अपने पेपर पब्लिश कर चुके होते हैं। अभी ये सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, सिर्फ आप मुझे हाथ खड़ा करके बताएं कि आप में से कितने लोगों ने आज तक एक भी पेपर पब्लिश किया हुआ है, यानी जो किसी जर्नल में बाकायदा पब्लिश हो गया हो। तो अभी ये तादाद थोड़ी है, कम है ना, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगले साल ये तादाद 30-40% हो जाए। अभी आपको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है कि आप यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे आप चीजें सीख लें। एक साल के अंदर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप 30-40% लोग कर लें। अभी हम एक कोर्स कराते हैं फंडामेंटल रिसर्च का, उसमें 80% स्टूडेंट्स हैं। तो आप देखें कि मेडिकल स्टूडेंट जो है ना, उनमें इस बात का शौक है कि हम इस कोर्स को सीखें, न्यूरोलॉजी को सीखें और रिसर्च को सीखें। इसी तरह जितनी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, वो सब स्टूडेंट्स को फ्री मेंबरशिप दे रही है। जैसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी है, आप में से जितने स्टूडेंट हैं ना, वो अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फ्री में मेंबर बन सकते हैं, नो कॉस्ट। आप उनको जाइए, रजिस्टर हो जाइए, और वो आपके पास जितना रिसर्च का टूल है वो आपको देंगे, सिखाएंगे, आपको अवार्ड देंगे अगर आपको रिसर्च करेंगे, आपके पेपर पब्लिश करेंगे। या यूरोपियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी है, वो आपको रिसर्च की फ्री मेंबरशिप दे रही है। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस आपको फ्री में मेंबरशिप दे रही हैं कि आप उनके फ्री में मेंबर बन जाइए, और आपको वो रिसर्च सिखाएंगे और आपको सपोर्ट करेंगे और आपको हेल्प करेंगे। इस तरह की चीज़ों से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। ये सारे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। तो जब आपको एक फ्री में मेंबरशिप मिल रही है तो आपको ये लेनी चाहिए, और वो जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उससे आपको फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि तकरीबन अगर स्टूडेंट को सही हम गाइड कर दें ना, जैसे हम अपने एक AU के स्टूडेंट को गाइड करते हैं, तो मेरा अंदाजा है कि तकरीबन अगर हम उनको सही गाइड करते हैं तो 20 to 30% स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको अपना पेपर पब्लिश कर लेना चाहिए मेडिकल कॉलेज से पहले पहले। अभी पाकिस्तान में देखें, मेडिकल एजुकेशन में रिसर्च मैंडेटरी नहीं है। अभी तमाम स्टूडेंट्स को ये लाजिम नहीं है कि आप रिसर्च पेपर लिखें या आप रिसर्च करें, लेकिन ये मेरे ख्याल में आगे जाके हो जाएगा। अभी रेजिडेंसी में ये लाजमी है, आप कभी भी रेजिडेंसी करेंगे, चाहे आप FCPS करें, चाहे आप MD करें, लेकिन आपको उसमें रिसर्च करनी पड़ेगी और उसमें आपको पेपर लिखने पड़ेंगे, 2 पेपर लिखने पड़ेंगे। तो ये जो इवन आपको अगर रेजिडेंसी करनी है और आपको आगे फेलोशिप में जाना है, अगर आपको आगे FCPS करना है, आप ये चाहते हैं कि आपको अच्छी जगह FCPS मिले, आपका चांस बेहतर उस वक्त होगा जब आपने रिसर्च की हुई होगी। यानी हम जब इंटरव्यू कर रहे होते हैं ना FCPS के कैंडिडेट्स के, तो हम ये पूछते हैं उनसे कि भाई आपने रिसर्च की है कि नहीं की है। तो वो मेडिकल स्टूडेंट्स के जिन्होंने रिसर्च की हुई होती है, उनको अच्छी जगह रेजिडेंसी मिल जाती है और रेजिडेंसी मिलने के चांसेस उनके ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो अगर आपको आगे FCPS करना है या आपको फेलोशिप करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग अभी से मेडिकल रिसर्च के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन करें, उसको सीखें और उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट करें। अच्छा, अब जब हम लोगों से रिसर्च का कहते हैं ना, तो लोग उसके बताते हैं कि जी हम उनसे पूछते हैं आप रिसर्च क्यों नहीं करते ना, तो सो लोग कहते हैं जी हम रिसर्च वाले बंदे नहीं है। वो समझते हैं रिसर्च वाले को अलग से खास बंदे होते हैं जो बड़े रिसर्च करने वाले बंदे होते हैं। ऐसा नहीं है, हर बंदा रिसर्च कर सकता है। हर बंदा जिसने इंटर पास किया और मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया है ना, तो उसमें इतनी काबिलियत है कि वो रिसर्च कर सकता है। तो इसलिए तमाम मेडिकल स्टूडेंट जो है ना, वो रिसर्च कर सकते हैं, उसके लिए कोई रिसर्च पर्सन होना ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात है कि रिसर्च के बारे में समहाउ ये कॉन्सेप्ट है कि रिसर्च कोई बहुत मुश्किल काम है या ये कोई बहुत हाई फाई काम है जो सिर्फ कुछ खास बंदे कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, तमाम स्टूडेंट्स रिसर्च कर सकते हैं और ये रिसर्च सबके लिए ज़रूरी है। यानी हमारे यहाँ पे फैकल्टी भी मौजूद है, हमारे यहाँ पे रेजिडेंट्स भी मौजूद है। मैं सिर्फ स्टूडेंट से नहीं कहता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स को रिसर्च करनी चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि हमारी तमाम फैकल्टी को रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, उनको रिसर्च सुपरविजन होनी चाहिए, क्योंकि आप अपने स्टूडेंट्स को, ट्रेनिंग्स को अगर सुपरवाइज नहीं करेंगे तो वो रिसर्च सीख नहीं सकते हैं। इसी तरह तमाम रेजिडेंट्स को इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। अभी रिसर्च हमारे एग्जाम का पार्ट नहीं है। एक वजह ये भी है कि हम अपने एग्जाम में, MBBS के एग्जाम में उनसे रिसर्च के बारे में नहीं पूछते हैं कि आपने क्या रिसर्च की है, क्या सीखा है आपने ना। इस वजह से भी बहुत सारे लोग रिसर्च पे इतनी तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन अब रिसर्च का मॉड्यूल आ गया है आपके सिस्टम के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर,
तो उसके ऊपर आपकी असेसमेंट भी होगी कि आपने सीखी क्या है और क्या नहीं सीखी है। अभी तक मेडिकल कॉलेजेस में रिसर्च मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये आगे जाके मैंडेटरी हो जाएगी, तो इसलिए तमाम स्टूडेंट्स उनको फिर ये बात करनी पड़ेगी और सीखनी पड़ेगी। एक वजह और जो बहुत सारे कॉलेजों में होती है, जो शायद मेरे ख्याल यहाँ इतनी नहीं है, वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि जी हमें कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हमें कोई रिसर्च की सपोर्ट नहीं है। तो अब ये यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है फैकल्टी की, लेकिन यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि रिसर्च का मॉड्यूल भी है, डिपार्टमेंट भी है, वो आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, स्टेटिस्टिकल सपोर्ट भी हो सकती है आपको, इवन यूनिवर्सिटीज बाद वक़्त फंडिंग भी देती हैं अपने स्टूडेंट्स को कि वो रिसर्च करें। तो ये यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है कॉलेज की कि तमाम स्टूडेंट्स को वो फंडिंग भी प्रोवाइड करे, सपोर्ट भी प्रोवाइड करे, और इसके अंदर हम सबको मिलजुल के कोशिश करनी चाहिए कि ये सपोर्ट मिले। लेकिन अगर ये होगी तो स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च करना आसान हो जाएगा। अब ये लोग सवाल पूछते हैं कि जी रिसर्च कब करनी चाहिए। लोग कहते हैं जी 4th ईयर में करनी चाहिए, फाइनल ईयर में करनी चाहिए, या जब बिल्कुल आप एंड पे आ जाए करनी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि जिस दिन से आप मेडिकल कॉलेज में आए ना, उसी दिन से आपको रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। तो 1st ईयर में ही आपको मेडिकल रिसर्च के बारे में मालूमात होनी शुरू हो जानी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि चले आप एक्टिवली रिसर्च में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन कम अज कम 1st ईयर के अंदर आपको जो रिसर्च की बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको हासिल होनी चाहिए। इसीलिए हम अपने यहाँ जो रिसर्च मॉड्यूल है वो 1st ईयर से पढ़ाते हैं, कि हम उनको बताते हैं कि भाई रिसर्च का कोर्स कर लें, वो उनको रिसर्च एथिक्स का पता होना चाहिए, उनको गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस का पता होना चाहिए, उनको रिसर्च मिसकंडक्ट का पता होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि जर्नल क्लब में क्या करते हैं, रिसर्च को एनालाइज किस तरह करते हैं, उसकी एनालिसिस किस तरह करते हैं, उनको रिसर्च की टाइप्स पता होनी चाहिए। तो इवन 1st ईयर के जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं ना, उनको भी ये पता होना चाहिए कि आगे जाके हमें रिसर्च करनी है और उसके लिए हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो अभी ये हमें 1st ईयर से ही अपनी एजुकेशन शुरू कर देनी चाहिए। हमारे यहाँ स्टूडेंट के रिसर्च फोरम होते हैं, जो फाइनल ईयर 4th ईयर वाले होते हैं, वो 1st ईयर और 2nd ईयर वालों को पढ़ा रहे होते हैं कि रिसर्च कैसे की जाती है और रिसर्च के अंदर किस तरह इन्वॉल्व हुआ जाता है। तो जो आप में से सीनियर स्टूडेंट है ना, जो थोड़े बहुत रिसर्च कर रहे हैं, उनकी ये ड्यूटी है कि अपने जूनियर स्टूडेंट को सिखाएं रिसर्च के बारे में। उनको 1st ईयर में ही उनको रिसर्च के बारे में सिखाना शुरू करें, उनको कोर्सेज कराना शुरू करें। और दूसरी बात है कि 2nd और 3rd ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए रिसर्च के अंदर। आपको डेटा कलेक्शन आनी चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि पेशेंट से इंटरव्यू किस तरह करते हैं, सर्वे किस तरह करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको 2nd और 3rd ईयर में सीखनी चाहिए, ताकि आप डेटा के जो टूल्स हैं ना, उससे आप वाकिफ हो सकें। और फिर 4th और फाइनल ईयर में आपको बाकायदा रिसर्च प्रोजेक्ट करने चाहिए। तो हर स्टूडेंट के पास ना एक रिसर्च प्रोजेक्ट होना चाहिए, हर स्टूडेंट के पास। और बाज़ औक़ात 4-5 स्टूडेंट मिलकर भी कोई एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हर बंदे को किसी न किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना चाहिए कि वो उस रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा हों। और फिर हम ये कोशिश करें कि 4th ईयर में और फाइनल ईयर में हम जाके अपने पेपर पब्लिश करना शुरू करें। मतलब अगर आप 4th ईयर में आ गए और आपने कोई पेपर नहीं किया, कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, तो इसका मतलब आप दुनिया से पीछे हैं। अभी दुनिया के अंदर तो 4th ईयर के स्टूडेंट प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं और पेपर लिख रहे होते हैं। तो आपको ये अपनी सलाहियत पैदा करनी चाहिए कि जैसे आप और चीज़ें सीख रहे हैं, आप ये भी चीज़ सीखें। और मेडिकल कॉलेज ख़त्म होने से पहले ये मैं तमाम स्टूडेंट से कहता हूँ कि मेडिकल कॉलेज आपका ख़त्म हो गया है, MBBS आपका हो गया है, और आपने अगर एक पेपर भी पब्लिश नहीं किया है, तो इसका मतलब आप अभी काफ़ी पीछे हैं। आप अभी कंपटीशन वाले फेज में नहीं है, मोड में नहीं है। आगे लिए आपके लिए फेलोशिप मिलना मुश्किल है, आगे आपको फैकल्टी पोजीशन मिलना मुश्किल है, आगे आपको जो एक कॉम्पिटिटिव जॉब है उसके अंदर जाना मुश्किल है। तो इसलिए तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स को इसको अभी से टारगेट करना चाहिए, चाहे वो 1st ईयर में हो, चाहे 2nd ईयर में हो, 3rd ईयर में और 4th ईयर में हो, कि वो इस मेडिकल रिसर्च को सीखें भी, और बाय द एंड ऑफ मेडिकल कॉलेज आप इसको पेपर पब्लिश करने की सलाहियत आपके अंदर हो जानी चाहिए। अब देखें, ये रिसर्च, पहली बात तो कि रिसर्च एक स्किल है। जैसे आप लंबर पंक्चर आप सिर्फ वीडियो देख के नहीं सीख सकते कि आपने वीडियो देख ली 1 दफा 2 दफा 3 दफा अब आपको आ गई, नहीं, आपको करना पड़ेगा। जैसे स्विमिंग एक स्किल है ना, आप पूरा दिन स्विमिंग की वीडियो देखते रहे लेकिन आपको स्विमिंग नहीं आएगी जब तक आप पानी के अंदर उतरेंगे नहीं और गोते नहीं खाएंगे और हाथ पांव चलाएंगे नहीं, जब तक स्विमिंग नहीं आएगी। इसी तरह सारी स्किल्स के साथ साथ रिसर्च भी एक स्किल है। ये आपको कोर्स करने से नहीं आएगी कि आपने 1 2 3 4 कोर्सेज कर लिए। रिसर्च आपको करनी पड़ेगी, हैंड्स ऑन आपको करेंगे तो फिर आपको आएगी। लेकिन मैं तमाम लोगों से कहता हूं कि सबसे पहला काम यह है कि आपको ये रिसर्च का एक बेसिक कोर्स अटेंड करें। ये जो सेमिनार्स होते हैं, कोर्सेज होते हैं, जैसे आप यहाँ पे वर्कशॉप्स हो रही हैं,
इससे आपको हेल्प मिलती है कि आपको इंट्रोडक्शन हो जाता है कि आपको करना क्या 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 है, और आप ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि रिसर्च प्रोटोकॉल क्या चीज़ होती है, डेटा क्या चीज़ होती है, डेटा एंट्री एनालिसिस क्या चीज़ होती है। दूसरी बात यह है कि आपको रिसर्च करने के लिए एक सुपरवाइजर चाहिए। तमाम मेडिकल स्टूडेंट को ये लाजिम है कि उनका एक रिसर्च सुपरवाइजर हो, एक फैकल्टी हो, कोई सीनियर रेजिडेंट हो, सीनियर इंस्ट्रक्टर हो, रजिस्ट्रार हो, कोई ना कोई एक फर्द हो जो आपकी रिसर्च को सुपरवाइज करे। स्टूडेंट्स को अनसुपरवाइज रिसर्च नहीं करनी चाहिए। और हमारी फैकल्टी की भी ये जिम्मेदारी है कि अपने स्टूडेंट्स को ये सर्विस प्रोवाइड करें। हर फैकल्टी के पास 2, 4, 5 स्टूडेंट्स ऐसे होने चाहिए कि जिनके वो मेंटर हों, जिनको वो ये सिखाएं रिसर्च का काम ना। तो पहली बात तो जो भी रिसर्च करना चाह रहे हैं उसको एक सुपरवाइजर तलाश करना चाहिए, एक मेंटर तलाश करना चाहिए। फैकल्टी से बात करें कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, हम आपके सुपरविजन में काम करना चाहते हैं, तो ये जरूर। तीसरी बात ये है कि रिसर्च ज़्यादातर एक बंदे का काम नहीं है, रिसर्च एक टीम वर्क है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं ना। तो आप एक रिसर्च की टीम बनाइए, चाहे स्टूडेंट्स ही हो, उसमें सीनियर हो, जूनियर स्टूडेंट्स हो, और हर एक के जिम्मे अलग अलग काम भी हो सकते हैं इसमें, लेकिन रिसर्च एक टीम वर्क है। आपने दुनिया में देखा होगा जितने पेपर पब्लिश होते हैं ना, किसी में 10 ऑथर होते हैं, किसी में 5 होते हैं, किसी में 20 होते हैं, किसी में 50 होते हैं, बाज़ औक़ात 100 ऑथर भी होते हैं। लेकिन कोई भी पेपर पब्लिश होते हैं उसमें बहुत सारे ऑथर्स होते हैं, इसलिए कि वो सब मिल के काम कर रहे होते हैं, टीम के तौर पे काम कर रहे होते हैं। तो अभी हम भी ये चाहते हैं कि आपके अंदर अभी से टीम वर्क की आदत पड़े, कि आप रिसर्च का टीम वर्क शुरू करें, कि आप 6-7 लोग, 4-5 लोग मिलकर एक रिसर्च का ग्रुप बनाएं और वो सीखें भी और एक दूसरे भी सीखते हैं। देखें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, जब हम आपस में काम कर रहे होते हैं तो हम एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारा कोई प्रोफेसर हमें सिखाए, बल्कि रिसर्च हम एक दूसरे से सीख रहे होते हैं, तो ये करें। चौथी बात यह है कि हमें स्टूडेंट लेवल पे ना जनरल क्लब करने चाहिए। जनरल क्लब करने से ये होता है कि आपको दूसरे जो रिसर्च पढ़ रहे होते हैं ना, उससे आपको पता चलता है कि जो पहले लोगों ने रिसर्च की है वो किस तरह की है, उनकी मेथडोलॉजी क्या थी, उसमें कमी कमजोरी क्या थी, उन्होंने किस तरह अपने डेटा को लिखा है, प्रेजेंट किया है ना। तो आप जब तक दूसरों के काम को नहीं समझेंगे, जब तक आप अपना पेपर तो लिख भी नहीं सकते ना। तो स्टूडेंट लेवल के ऊपर जनरल क्लब्स होने चाहिए। ज़्यादातर रेजिडेंसी लेवल पे तो होते हैं, लेकिन कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर के लेवल पे जनरल क्लब होने चाहिए, जहाँ पे स्टूडेंट आर्टिकल को पढ़ें और उसको डिस्कस करें कि इस आर्टिकल में क्या फाइंडिंग है और इससे क्या हमें नतीजा मिल रहा है, क्या हमें सबक मिल रहा है। इसी तरह एक और चीज़ है जो मुझे पता नहीं कि यहाँ है या नहीं है, हमारे आगा खान यूनिवर्सिटी में, वो है स्टूडेंट्स रिसर्च फोरम, कि उसमें जो सीनियर स्टूडेंट हैं जो ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने एक पूरा फोरम बनाया हुआ है जिसमें वो सारे जूनियर स्टूडेंट्स को वो फिर उनको मेंटरिंग भी कर रहे होते हैं, उनको सपोर्ट भी फराहम कर रहे होते हैं। तो जो लोग यहाँ थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं, एक्टिव हैं, उनको चाहिए कि अपने स्टूडेंट्स का रिसर्च फोरम बनाएं, ताकि जो और स्टूडेंट्स हैं जो इतना एक्टिव नहीं है रिसर्च में, उनको आप लोग हेल्प कर सकें और उनकी मदद कर सकें। अब जैसे ये कोर्स है जो हम कराते हैं हर साल ना, फंडामेंटल्स ऑफ रिसर्च का, अब ये 18 घंटे का कोर्स है और इस 18 घंटे में हम उनको तमाम रिसर्च की बुनियादी चीज़ें सिखा देते हैं। अभी इस वक्त ये चल रहा है, तकरीबन इसमें 340 पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन इनमें से 80-90% स्टूडेंट्स हैं। तो अब ये देखें कि सारे स्टूडेंट्स ने इस कोर्स को अटेंड कर रहे हैं, तो जब ये सर्टिफाई होंगे 18 घंटे के बाद ना, तो उनको काफ़ी रिसर्च के बारे में बेसिक मालूमात हो जाएंगी, जिससे फिर आगे आपको रिसर्च करना आसान हो जाएगा। तो अब जो लोग रिसर्च शुरू करना चाहते हैं, अब उनको करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप रिसर्च करना चाहेंगे ना, आपको एक रिसर्च का टॉपिक सिलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई आप क्या रिसर्च करना चाहते हैं। आपको एक पता होगा कि भाई आप डायबिटीज़ पे रिसर्च करना चाहते हैं, स्ट्रोक पे रिसर्च करना चाहते हैं, आप कोई सर्जिकल प्रोसीजर पे रिसर्च, जो भी दुनिया में हज़ारों लाखों टॉपिक हैं, लेकिन आपको एक टॉपिक सिलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई मैं इस बीमारी में रिसर्च करना चाहता हूँ। जो भी, चलो ये नहीं है कि मैं कहूँ कि आप इस बीमारी, जो भी बीमारी आपको पसंद हो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, या आपका ग्रुप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। दूसरी बात है कि टॉपिक सिलेक्ट करने से काम नहीं चलेगा सिर्फ, फिर आपको अगला मरहला ये होगा कि अब आपको एक रिसर्च क्वेश्चन बनाना पड़ेगा कि भाई आपकी रिसर्च का सवाल क्या है। रिसर्च हमेशा सवाल से शुरू होती है, कि कोई सवाल होता है जिसका आप जवाब तलाश करते हैं। तो इसलिए पूरी इल्म ही जो है ना सवाल पूछने का नाम है। इल्म किस बात का नाम है? सवाल पूछने का नाम है। अगर आप सवाल नहीं पूछते तो इसका मतलब आपका इल्म बहुत महदूद है। तो रिसर्च स्टार्ट होती है एक रिसर्च क्वेश्चन से, कि आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या होगा। वो क्वेश्चन आपको डेवलप करना पड़ेगा अपने मेंटर के साथ, अपने फैकल्टी के साथ बैठकर, कि रिसर्च क्वेश्चन क्या होगा। अच्छा, रिसर्च क्वेश्चन के लिए सबसे जरूरी चीज़ है लिटरेचर सर्च करना, कि आपको पहले ये देखें कि इस मौजू पे जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हैं उस पर दुनिया ने और क्या क्या रिसर्च हुई है ना।
ज़ाहिर है आप पहिए को दोबारा तो ईजाद नहीं करना चाहते ना, पहिया तो ईजाद हो चुका है, तो जो रिसर्च पहले हो चुकी है उसको दोबारा नहीं करना है, और अगर करना भी है तो उसकी कोई पता चले कि यहाँ नहीं हुई बाहर हुई है तो हम दोबारा कर लें इसको। तो लिटरेचर सर्च आपको करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आपको एक रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो अब तक इस मौजू पे काम हुई है उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें कि जो काम नहीं हुआ हुआ, जो काम नहीं हुआ हुआ ना उसको कहते हैं रिसर्च गैप। उस गैप को आप फिल करेंगे तो वो आपकी रिसर्च कहलाएगी कि वाकई आपने फिर कोई मेडिकल एजुकेशन में या रिसर्च में कोई कंट्रीब्यूशन किया है। तो इसलिए रिसर्च शुरू हमेशा यहाँ से होगी कि आपको एक टॉपिक सिलेक्ट करना है, फिर एक रिसर्च क्वेश्चन सोचना है, लिटरेचर सर्च करनी है, और उसके बाद रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद फिर आपको रिसर्च करनी है उस गैप को फिल करने के लिए, उस इंफॉर्मेशन गैप को फिल करने के लिए। इसीलिए ये बात तय है दुनिया के अंदर कि आप जो कोई भी रिसर्च करेंगे ना वो दुनिया के अंदर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन जनरेट करने का बाइस होनी चाहिए, और वही चीज़ पब्लिशेबल होती है कि आपने कोई नई रिसर्च की है, कोई नया डेटा जमा किया है जो दुनिया में और किसी ने नहीं किया हुआ, तो फिर वो डेटा आप पब्लिश करते हैं तो वो न्यू इन्फॉर्मेशन आपकी ऐड हो जाती है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन ऐड करना है, तो ये आपका समझ लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है कि जिसके ऊपर आपको रिसर्च का काम अपना करना है। लेकिन रिसर्च शुरू करने से पहले ये 5 चीज़ें हैं कि जो आपको करने की ज़रूरत है। पहली बात तो अभी दुनिया में स्टैंडर्ड ये बन गया है कि आप कोई भी रिसर्च करें उससे पहले आपके पास एक रिसर्च सर्टिफिकेशन होनी चाहिए कि आप रिसर्च कर सकते हैं। आपके पास कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपने कोई रिसर्च का कोर्स किया हुआ, उसके लिए ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं अभी दुनिया में, उसके लिए वो होता है सर्टिफिकेट होता है जिसको हम सिटी सर्टिफिकेट कहते हैं, कि तमाम स्टूडेंट्स कि जिन्होंने रिसर्च करनी है आगे जाकर वो पहले एक सिटी सर्टिफिकेट अटेन करें ऑनलाइन कोर्स के जरिए से कि उन्हें इस रिसर्च की बुनियादी मालूमात है। अब देखें 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात तो आपको रिसर्च के एथिक्स का पता होना चाहिए कि हर रिसर्च के अंदर एथिकल अप्रूवल लाजमी होती है। हर यूनिवर्सिटी में एक एथिकल कमेटी होती है जो आपको बताती है कि आपकी रिसर्च सही है कि नहीं है, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और उसकी एथिकल बाउंड्रीज होती हैं, उसके अंदर रह के आपको रिसर्च करनी है। दूसरी बात यह है कि आपको रिसर्च मिसकंडक्ट का पता होना चाहिए। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स में जज्बा ज़्यादा होता है, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम पेपर पब्लिश कर लें और उसमें 2 नंबर ही करते हैं, या बाज़ औक़ात फेक डेटा आ जाता है या डेटा की गलत इंटरप्रिटेशन आ जाती है, ये रिसर्च मिसकंडक्ट कहलाती है। रिसर्च मिसकंडक्ट का आपको अभी से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तरह का कोई काम करेंगे और आप पकड़े जाएंगे, ज़ाहिर बंदा कभी भी गलती करता है, पकड़ा जाता है, तो फिर आपको सारी दुनिया के लोग बार कर देंगे कि आप ना कभी पेपर पब्लिश कर सकते हैं, ना कभी रिसर्च कर सकते हैं, ना आपका कोई प्रमोशन हो सकता है, ना कुछ हो सकता है। तो इसलिए रिसर्च मिसकंडक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी तरह प्लेजरिज्म का आपको पता होना चाहिए कि आप कोई भी डेटा कॉपी नहीं कर सकते, आपको खुद अपना डेटा खुद लिखना है, वरना आप सारे जर्नल तो चेक करते हैं कि प्लेजरिज्म कितना है आपके पास और कितना नहीं है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह आपको कंसेंट का पता होना चाहिए। अभी कोई भी मरीज का डेटा आप बगैर उसकी मर्जी के आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मरीज का जिसका डेटा आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कंसेंट है या नहीं है आपके पास। अभी ये बुनियादी चीज़ें हैं जो आपको रिसर्च करने से पहले जिसके बारे में मालूमात होनी चाहिए। ये आपका जो रिसर्च मॉड्यूल होता है उसमें ये चीज़ें आपको सिखा देते होंगे, लेकिन अगर आप कम से कम ये करें कि आप एक सर्टिफिकेशन, हर बंदा जो स्टूडेंट रिसर्च करना चाह रहा है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, वो इसको करें। और उसके बाद ये है कि आपके पास एक सुपरवाइजर होना चाहिए। स्टूडेंट लेवल पे तो कम से कम ये लाजमी है कि आपके पास एक सुपरवाइजर होना चाहिए, आपके पास एक टीचर हो, सीनियर रेजिडेंट हो, कोई भी हो, फैकल्टी हो, वो सुपरवाइज रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट को सुपरविजन की ज़रूरत होती है और ट्रेनीज को ज़रूरत होती है। और आखिरी बात यह कि जो भी आप रिसर्च करें उसका एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, वो चीज़ पहले से लिखी हुई होनी चाहिए कि आप क्या रिसर्च करना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं रिसर्च प्रोटोकॉल। और रिसर्च प्रोटोकॉल के अंदर ये 6-7 चीज़ें होती हैं कि जो आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पहले से लिख लेनी चाहिए रिसर्च करने से पहले। आप जब एथिकल अप्रूवल लेंगे तो भी आपको चाहिए होगा, जब आप रिसर्च करेंगे जब भी चाहिए होगा, और जब कभी आप डेटा एनालाइज करेंगे आपको हमेशा ये रिसर्च प्रोटोकॉल चाहिए होगा। ये प्रोटोकॉल हर बंदा जो रिसर्च कर रहा है उसके पास वो प्रोटोकॉल होना चाहिए, उसमें बैकग्राउंड होना चाहिए, आप रिसर्च क्यों कर रहे हैं ये लिखा हुआ होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव लिखे होने चाहिए, रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए, आपको इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया लिखा होना चाहिए, सैंपल साइज लिखना चाहिए, आपको ये लिखना चाहिए कि आपने इसके एथिकल अप्रूवल लिए कि नहीं लिए, जो कि हर प्रोजेक्ट की लेनी चाहिए आपको। फिर डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे उसका फॉर्म आपके पास होना चाहिए, उसका टूल जिसको हम कहते हैं,
डेटा कलेक्शन का मेथड क्या होगा, आप टेलीफोन पे करेंगे, लोगों से इंटरव्यू करेंगे, चार्ट से निकालेंगे डेटा, वो आपको लिखा हुआ होना चाहिए। फिर डेटा एनालिसिस होनी चाहिए कि आप इसको किस तरह एनालाइज करेंगे, आप सिर्फ फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे, आप कोरिलेशन करेंगे और क्या आपकी मेथडोलॉजी यूज़ करेंगे, उसमें आप अपनी स्टेटिस्टिक्स वालों से भी थोड़ी मदद ले सकते हैं। और फिर आउटकम असेसमेंट होना चाहिए और रेफरेंसेज होने चाहिए कि जिस बुनियाद पे आपने पूरा प्रोटोकॉल बनाया है। तो कोई भी रिसर्च बगैर प्रोटोकॉल के नहीं हो सकती है। तो रिसर्च करने के लिए जो एक इब्तदाई कदम है कि आप सारी प्री रिक्विजिट पूरे करने के बाद आपने एक रिसर्च प्रोटोकॉल लिख लिया, उस रिसर्च प्रोटोकॉल को आपने एथिकल कमेटी से अप्रूव करा लिया, अब उसके बाद आप उसके मुताबिक अपना काम शुरू कर सकते हैं आपको करने के बाद। अच्छा, आप देखें हर रिसर्च की एक आउटपुट होती है। आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं ना, अजर तो अल्लाह ताला के आपको चलो उसका हर काम का मिल जाएगा, लेकिन रिसर्च की आउटपुट होती है। आउटपुट आपको 3 तरह की आउटपुट होती है रिसर्च। एक तो ये है कि उसका पेपर पब्लिश होना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि जितनी रिसर्च आप करें, चाहे वो अच्छी क्वालिटी की हो या पुअर क्वालिटी की हो, उसको पेपर की फॉर्म में पब्लिश होना चाहिए। ये आपका टारगेट होना चाहिए। बाज लोग हमारे करते हैं, रिसर्च कर लेते हैं लेकिन कभी पब्लिश नहीं करते, या उसको कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट कर देते हैं या पोस्टर प्रेजेंट कर देते हैं। हमारा हदफ नहीं होना चाहिए। हमारा हदफ ये होता है कि हर वो आप काम करें वो आपको एज ए पेपर आप उसको पब्लिश करें। थीसिस जो आप लिखते हैं ना, जैसे कॉलेजेस में थीसिस लिखी जाती है और यूनिवर्सिटियों में थीसिस लिखी जाती है, वो थीसिस जो है वो पेपर नहीं होती है। इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट भी कोई पब्लिकेशन नहीं होती है। तो ये चीजें हैं कि जिसका आपको ख्याल करना चाहिए कि हमें रिसर्च आउटपुट होनी चाहिए। अब देखें, रिसर्च के ऊपर बहुत सारे तरह तरह के पेपर्स होते हैं जो मैं आपको अगले 10 मिनट में बताऊंगा कि आप इसको किस तरह कर सकते हैं ना। इसमें केस रिपोर्ट्स होती हैं, छोटी केस सीरीज होती हैं, लार्ज सीरीज होती हैं, डेटाबेसेस होते हैं, आरसीटीज होती हैं। अभी तमाम स्टूडेंट्स को हमें इस बात को टारगेट करना चाहिए कि हमारे तमाम स्टूडेंट को ना कम से कम केस रिपोर्ट जरूर पब्लिश करनी चाहिए। आप जिस तरह के अस्पताल में ना लम्स इतना बड़ा ट्रेशरी के सेंटर है, समझ लें तो रेफरल सेंटर है ना, यहाँ पे इतने केसेस आते हैं कि आप हर हफ्ते एक केस रिपोर्ट पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन आपको देखना चाहिए अपनी फैकल्टी के साथ और इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि जो इंटरेस्टिंग केसेस हों उसके ऊपर आप लिटरेचर सर्च करें, अपने अटेंडिंग से गुफ्तगू करें और उसके बाद उसको पेपर के तौर पे लिखें। हमारा अपना यहाँ का भी जर्नल है और भी इतने जर्नल हैं, लेकिन स्टूडेंट लेवल पे और दुनिया में जितने मैं बताऊँ बड़े बड़े जितने रिसर्चर हैं ना, सब ने स्टूडेंट लेवल पे केस रिपोर्ट शुरू की है। तो आपकी जो केस रिपोर्ट से आपको अपना शुरू करना चाहिए कि तुम्हारे तमाम स्टूडेंट को कम से कम केस रिपोर्ट जरूर पब्लिश करनी चाहिए, जो कि बहुत आसान काम है, इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत उसके तरीके हैं और हर हमारे तकरीबन यहाँ के लोग केस सीरीज पब्लिश करते रहते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं कि जो हम पब्लिश कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो आप शॉर्ट केस सीरीज होती है कि जिसमें आप 25-30 मरीजों का या 30-40 मरीजों का डेटा जमा करके उसको पब्लिश करें। खासतौर पे वो बीमारियां कि जो कॉमन नहीं होती है ना, उनका आप डेटा जमा करें, इसको हम शॉर्ट केस सीरीज कहते हैं। तो ये भी आप इसका एक प्रोटोकॉल डेवलप करें, टॉपिक सिलेक्ट करें, अपने अटेंडिंग से बात करें और इसके बाद शॉर्ट केस सीरीज का काम कर सकते हैं। ये समझ लीजिए, ये 2 टाइप ऑफ पेपर्स हैं जो स्टूडेंट्स के लिए निस्बतन आसान काम है करने का, कि जो वो आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके लिए ज़ाहिर आपके पास ज़रूरी है कि आपका एक अटेंडिंग होना चाहिए, एक डेटा शीट आपको बनानी पड़ेगी, प्रोटोकॉल लिखना पड़ेगा और उसके मुताबिक वो आपको फोकस इंफॉर्मेशन जमा करनी पड़ेगी और जब आप इसको जमा कर लें तो आप उसको पेपर के तौर पे लिख सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे पेपर्स हैं। अच्छा, जो बड़ा काम करने का है, जो ज़्यादा बड़े सीनियर स्टूडेंट्स करते हैं और जो बड़ा ग्रुप स्टूडेंट का कर सकता है, वो एक अगर आपके पास बड़ा रिसर्च का ग्रुप है, 8-10 लोग हैं जो मिल के करना चाहते हैं, तो फिर आप कोई लार्ज केस सीरीज कर सकते हैं कि जिसमें 100, 150, 200, 300, 400 इस तरह के मरीजों के जिनका आप डेटा जमा करें। उनके अंदर फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा रिगरेंस होती है उसके अंदर और ज़्यादा बड़ी टीम चाहिए होती है, ज़्यादा उसकी इन डेप्थ एनालिसिस करनी पड़ती है आपको। लेकिन बड़े लेवल के ऊपर ये काम किया जा सकता है, खासतौर पे अटेंडिंग और फैकल्टीज इस काम को ज़्यादा अच्छी तरह करवा सकते हैं। एक जो और दूसरा करने का काम है जो स्टूडेंट लेवल पे हो सकता है, वो ये कि आप बीमारियों का डेटाबेस डेवलप करें। और बहुत सारी बीमारियों के डेटाबेसेस होते हैं जो अस्पताल की सतह पे बीमारियों का डेटाबेस डेवलप करें, जैसे स्ट्रोक के मरीजों का डेटा हो गया या और बीमारियों का डेटा हो गया, उनका डेटाबेस डेवलप करें। उसमें फिर हज़ारों मरीज होते हैं ना, और उन हज़ारों मरीजों का डेटा जो है ना वो आप पब्लिश कर सकते हैं। तो इसलिए यानी ये एक चीज़ है कि जो तमाम स्टूडेंट्स को इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। डेटाबेस ज़्यादा बड़ा चीज़ होती है, लेकिन उसमें हम जब स्टूडेंट थे तो हम स्टूडेंट के ज़माने में हमने उसके अंदर पार्टिसिपेशन किए। अच्छा, दूसरी बात ये है
कि इसी तरह जो अब अगली चीज़ है जो मैं समझता हूँ जिस पे 2-4 मिनट हमें समझना चाहिए, वो ये कि तमाम स्क्रिप्ट राइटिंग आनी चाहिए। उसके कोर्सेज भी होते हैं, क्लासेस भी होती हैं, वो भी आप सीख सकते हैं, लेकिन आपको मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग होनी चाहिए कि आपको आर्टिकल लिखना किस तरीके से ना, वो भी एक स्किल है, वो भी एक आर्ट है। हर आर्टिकल का एक फॉर्मेट होता है, उसका एक तरीका होता है। वो शुरू लिटरेचर सर्च से होगा, लेकिन ज़ाहिर है उसके बाद फिर आपको उसका ऑब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा, बैकग्राउंड लिखना पड़ेगा, मेथडोलॉजी, रिजल्ट उसका लिखना पड़ेगा, टेबल्स आपको बनाने पड़ेंगे। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग भी एक स्किल है कि जो आपको डेवलप करनी चाहिए, और जब आप 2-4 पेपर लिखेंगे ना तो फिर अब ये स्किल आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। लेकिन पहला एक पेपर लिखना मुश्किल होता है। दूसरी बात ये कि जो भी आप पेपर लिखें ना, वो देखें कहीं ना कहीं पब्लिश हो जाएगा, तो आप उसको पब्लिश करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको जर्नल ढूंढना चाहिए कि कौन सा जर्नल है जिसको पब्लिश कर सकता है, लेकिन हमेशा आप कोई भी पेपर लिखेंगे ना वो पब्लिश हो जाता है। मेरे ऐसे पेपर हैं जो 6-6, 7-7 दफ़ा रिजेक्ट हुए, उसके बाद कहीं ना कहीं पब्लिश हो गए वो ना। तो इसका मतलब ये हो कि पेपर्स हमेशा पब्लिश हो जाते हैं, आपको उसको इम्प्रूव करना पड़ता है, उसके अंदर बेहतरी लानी होती है, और जर्नल तलाश करना पड़ते हैं कि आपको कौन सा जर्नल आपका मिलेगा। अब आखिरी 1-2 चीज़ें वो ये कि सबसे ज़्यादा शिकायत जो हमारे स्टूडेंट करते हैं वो जी टाइम ही नहीं मिलता, रिसर्च के लिए टाइम चाहिए होता है। तो पहली बात मैं ये कहता हूँ कि टाइम कोई मसला नहीं होता, सिर्फ प्रायोरिटी का मसला है। आप सिर्फ मोबाइल का अपना टाइम कम कर दें रोज़ाना 1 घंटा, तो आपको रिसर्च के लिए 1 घंटा मिलने लगेगा। दूसरी बात यह है कि एक टीम बनाएं, सब मिलकर काम करें। रोज़ाना का 6 लोग आधा घंटा काम कर रहे हैं तो ये तो 3 घंटा हो जाएगा ना। तो हफ्ते में 2-3 घंटा भी आप रिसर्च पे लगा दें तो उससे आपको काफ़ी ज़बरदस्त आउटपुट मिल जाएगी। और अगर टाइम नहीं मिल रहा तो फिर ज़ाहिर है आपको उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह रिसर्च फंडिंग भी अवेलेबल है पाकिस्तान में। बहुत सारे इदारे हैं जो रिसर्च फंडिंग देते हैं स्टूडेंट्स को। 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए अगर आपको चाहिए तो वो रिसर्च फंडिंग मिल जाती है आपको, इवन HEC से भी मिल जाती है, और इवन आपको CPSP से भी मिल जाती है। तो अगर आपको ऐसे कोर्सेज करने या प्रोजेक्ट करने के जिसमें रिसर्च फंडिंग चाहिए तो वो आप कर सकते हैं उसके अंदर, और उसकी आपको ज़रूरत हो सकती है। बस एक बात यह है कि कभी भी अपने आप को ओवरबर्डन ना करें, यानी ये नहीं कि आप 6 काम एक साथ शुरू कर देना। आप एक वक्त में एक प्रोजेक्ट करें, उसको कंप्लीट करें, फिर अगले पे जाएं। बैक वक्त 3-3, 4-4 प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व ना हो, वरना फिर जो है ना वो बंदा मतलब उसकी कुछ कर नहीं पाता, उसके नतीजे में उसका आउटपुट जो है वो नहीं हो पाता। तो अभी एंड हमारा ये है कि देखें हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं ना, इनमें बड़ा टैलेंट है, हमारी पूरी कौम के अंदर बड़ा टैलेंट है, और हम लोग बहुत काम कर सकते हैं। समाउ हमें अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है, और हमारी पूरी कौम के अंदर बड़ा टैलेंट है। मैं आपको एक ये तस्वीर जो शेयर कर रहा हूँ, ये एक पाकिस्तानी लड़की है जो 20 साल की लड़की है। अभी आप में से बहुत सारे लोगों की उम्र 20 साल से ज़्यादा है। 20 साल की लड़की है पाकिस्तान की, और उसने जाके माउंट एवरेस्ट की चोटी सर की। आप सोचिए ज़रा, अगर एक 20 साल की लड़की माउंट एवरेस्ट की चोटी सर कर सकती है, तो हमारे जो इतने हाई लेवल के स्टूडेंट्स हैं ये क्या रिसर्च नहीं कर सकते, और ये क्या पेपर नहीं पब्लिश कर सकते? और आपको पता है हमारी कौम के अंदर टैलेंट कितना है। हमारी कौम वाले जो है वो गाय को जो है रिक्शे में लेके जाते हैं। तो ये टैलेंट है हमारे अंदर। हम लोग इनोवेटिव लोग हैं सारी दुनिया के अंदर, जो आपको पता है नए से नए आइडिया कर लेते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है जो पाकिस्तानी लोगों की है, जो स्टूडेंट्स में भी है, वो ये है कि हम लोग 25 घंटा काम करते हैं रोज़ाना। तो ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, ये अगर रोज़ाना 25 घंटा काम करें तो हम काफ़ी प्रोडक्टिव हो सकते हैं। तो एट दी एंड आई वुड लाइक टू कंक्लूड कि सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपने मेरी बात को तवज्जो से सुना। दूसरी बात यह है कि कंक्लूजन हमारा ये है कि हमारे तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स को रिसर्च के अंदर इंगेज होना चाहिए। उनको अभी से टारगेट करना चाहिए कि रिसर्च के अंदर पार्टिसिपेट करें, और फिर इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि बाय द एंड ऑफ मेडिकल कॉलेज, जब आप कॉलेज से पास आउट हो, उससे पहले आपके 1, 2, 3 पेपर पब्लिश होने चाहिए। लेकिन वो ऐसे नहीं होंगे, उसके लिए आपको अभी से कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और अपनी टीम यूनिवर्सिटी के साथ मिल के काम करना पड़ेगा, अपने टीचर्स के साथ, तब आप जाके सतह पे पहुंच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. We are truly grateful to you for this enlightening session emphasizing more and more on research. Before moving on to our next speaker, I would like to welcome our third chair for this session, Professor Dr. Feroz Ali Kalhoro. Sir is Dean Dentistry. So welcome. Now our next speaker will be presenting the talk online, and Mr. Sheetal Bandare. He is the founding faculty of Patan Academy of Health Sciences, Nepal,
Currently, he is Associate Professor of Public Health and Medical Education at PAHS. So let us welcome now. Okay, thank you very much. So, my name is Sital Bhandari. I work in Nepal, Patan Academy of Health Sciences. I would like to thank the organizers for giving me this opportunity to share my experiences working with medical students to do research. It is an experience that I gathered in the last 20 years in 2 different medical universities. So currently I am working in Patan. Earlier I used to work in Kathmandu University. So this is the outline of my presentation. I would like to share the foundation that we have delivered for the research components for the medical students. This is the foundation theoretical knowledge. Then how we provided the hands-on research process experiences to the Nepalese medical undergraduates that might be of interest to you. Sometimes we stop here because medical students normally do not go for the ethical approval. So if we do not want them to do the publication, we can stop in the second step. But if we want to go beyond that, then we can go for the application part. And lastly, I would like to share some of the publication done by our students. This is the ultimate. So in the first 2 years of MBBS course or undergraduate course, demography is introduced, where we talk about the demographic variables, data quality, and the demographic processes. Then we also introduce them to the epidemiology. Epidemiology is divided into 2 parts, 1 and 2. I will show you the details in the next slide. Similarly, biostatistics is also divided into 2 parts, and we teach both epidemiology and biostat from year 1 to year 5 of MBBS curriculum. Then we introduce the research processes, the basics in the basic science and the applied in the clinical sciences. So this is how we have implemented it. In basic science, the data and variables from the demography is introduced with demographic processes. Then descriptive statistics is started. It goes up to the correlation and association studies. Epidemiology also starts here, and we discuss about the observational studies. The study designs are introduced here and measurements related to observation designs. And in this phase, we start the basics of research, and sometimes we provide readings on how the basic science research that has been transformed to the clinical sciences are also introduced, which is called a transformational research. And basic science research, sometimes we call it a bench research also. So after doing this 2 years of segmented implementation, then when they pass the basic science phase, then they come to the clinical science phase, 2.5 years. So we demography is then substituted by family health, where we talk a lot about the well-being of the student, of the faculty, of the patient, of the society. And here we discuss a lot of tools that can be used to assess the well-being. Then in statistics, we introduce the inferential part, where we introduce them to the p-value, effect size, and the designs. Epidemiology also does that, and they introduce the experimental study designs, and they talk about the importance of confidence interval, odds ratio, relative risks, and hazard ratios, with the examples from our country and South Asia especially. And in Research-2 course, students are need to work on a research project. So this might be a clinical research or a educational research, whatever they would like to try.
So once this part is done, then we move to the hands-on experience of research, and this is done by a team of faculty. So normally community medicine faculty are involved a lot, but we also involve the faculty from general practice or family medicine, and committee members, research committee members and ethics committee members also join us here. Okay, so what will we teach here? So here we teach the skills. So here the teaching has already been happened, so we would like them to put in groups, and normally there are 5 medical students in one group. So first of all, we introduce them to the concept of research topic. So first of all, they frame the research topic in the group, discuss in a group, and then each group will choose one topic. So when the topic is finalized, then we introduce them to the concept of research question for that topic. So same format is done, the individual framing is done, followed by group discussion and finalization, and research hypothesis is generated for each research question. So please remember, every group we have a faculty as a facilitator, and a student can ask, clarify the ideas to the facilitators. Usually we don't intervene a lot, but we help them to crystallize the concept. For example, in the research question, if they have a problem, we sometimes introduce a finer framework which is used to assess the research question, and ultimately we can also ask them to frame a research question using PICOT criteria. So once this is done, the second steps or second class, normally these classes are 2 to 3 hours of long, done in the afternoon. Then we next class, the same concept is taken, and research objectives are framed in a group, finalized. Research methods are discussed a lot here because biostat and epidemiology has already done their classes, so they need to link their research project with those classes. Then ultimately the most important thing that we teach them is the research tools. So they need to come up with a research tool for their project or for their research topic or research question. So again, the facilitators are the faculty members, and we help them to finalize these things. In the third part, what we do is we ask them to provide their tool validation plan, how they are going to, so pre-test, pilot test, the concept of reliability and validity comes here, which should have been discussed a lot earlier in their classes. Then data collection and management plan is discussed and finalized. Nowadays our students are using a lot of online tools like Google Form for a simple survey or Kobo Toolbox for a complex surveys. Currently we have also got a license to use RedCap in our institute, so we are slowly going to train them in that platform also. So data analysis plan is discussed, and after this what we do is we provide platform for students to implement these plans. So students will execute the plan, they prepare report, then we review the report, provide feedback, and if our course allows, then we also grade them. So group grading is done, not the individual grading. This part, if we stop here, then this is one part of the research. So because normally medical students group wise, they do not apply for the ethical approval, so we stop here and then the process is finalized. But if we want to go a little bit beyond that one, so we can do that. So in my college, whenever I was teaching at Kathmandu University in 2004-2008, this is where we stopped, because we never asked them to apply for the ethical approval. But in my current institute, in Pathan Academy of Health Sciences, School of Medicine, we want our students to go beyond this one.
So what we have done is, we have gone one step ahead. So here we ask them to prepare a full proposal first and then get it approval from the research committee. We help them, of course. Then we also ask them to get the ethical approval from institutional ethics committee or ethical review board, whatever is applicable. Then we collaborate with research committee and ethical committee to give the refresher course to our final year medical students and interns. So this is very important. And here again the faculty members are facilitators. Now if you want to have a research competency inbuilt in the undergraduate medical curriculum, then we should teach and also assess them. So in Patton Academy of Health Sciences, we prepare multiple choice questions, short answer questions, and auspice stations of demography, epidemiology, and biostatistics. And research project reports are defended in a viva voce. Every medical students will defend their research project. So this is one step ahead. So once it is done, then what happens is that students can do a publication. So in the fourth stage, we can help them to publish their research. So here, what we do is, sometimes your medical students after graduation, they come back to you. They come with a project. Sometimes they want to collaborate with us. This is currently ongoing project. So here our students are interested to see the well-being of the medical students. So medical college approval has been approved, and it has been approved by our National Ethical Board also. So 2 MBBS students and 1 BPS students are involved. I am the faculty supervisor for this one. So currently this is going as a pilot project. Okay. And some of our students have started forming their own independent research training groups. And one of such training groups is known as Health Research and Action. Here they provide mostly online, but sometimes also do the offline training on data analysis, qualitative, quantitative, mixed methods. But their course was started with the aim to training students on systematic review and meta-analysis. So this is something that going very well, and we are very happy to see that students are taking this type of initiation on their own. So ultimate goal of any research program will be the publication. So on that note, let me share some of the publication that was done recently in 21, 23 and 25. So this is one of the research published in Journal of Nepal Health Research Council, which is the Q3 Scopus journal. So this is one of the collaboration that we've done with the students. Then this is done in published in 2023 in GP and Emergency Medical Journal of Nepal. And the last in 2025, we were also able to publish this article in an international journal. If you can see a lot of collaborators are there, because sometimes we need more people nearby. We want to publish in a big international journal. So the experience is that research can be taught in undergraduate medical education course. It can be taught as a separate side curriculum within the community medicine, or it can be taught as a separate research curriculum within the MBBS program. So this is what I wanted to share with you all. So I would like to end my presentation. So if you have any questions and queries, I'll be more than happy to answer. Thank you. Thank you so much, sir, for your talk and sharing your experience. With this, it brings us to the end of this keynote session, and we'll move on to the shield distribution ceremony. For this, I would like to request our conference chairman, Dr. Manzoor Ali Lakhir, to come on stage, and I would like Dr.
Professor Dr. Munawar Alam Ansari to accompany sir, and I would also like Dr. Ilyas Siddiqui, Dean Community Medicine and Public Health Sciences, to join us on stage for shield distribution ceremony. I would like to request our all chairs for this session to join at stage for shield distribution ceremony. I would like to request our keynote speaker, Professor Dr. Mohammad Wase, to come on stage and receive his shield. I would request Dr. Feroz Ali Kalhoro to come forward and receive his shield. Now I request Dr. Ashok Kumar to come forward and receive his shield. Now I request Professor Dr. Sugra Parveen to come forward and receive her shield. And the last shield is for myself, being moderator for this session. Thank you so much, chairs, dignitaries, and moderator for such an insightful keynote session. Thank you very much, Dr. Anusha. Respected session chairs, distinguished faculty members, dear students and colleagues, Assalamu alaikum. I welcome you all to our second free paper session of this medical undergraduate research conference. In this session, we'll hear 8 insightful research presentations from our undergraduate students. We are honored to have our session chairs, Professor Mohammad Sohail, who's currently serving as Principal and Director Academics, People's University of Medical and Health Sciences, Professor Dr. On Khwaja from Liaquat Institute of Medical and Health Sciences, Thatta, Professor Saifullah Jamro. Dr. Jamro is currently serving as Professor of Pediatrics at Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto University, Larkana, and Professor Sarwar Qureshi, who is serving as Principal, Liaquat Institute of Health Sciences, Thatta, to kindly come forward on the stage. Welcome, sir. We have certain rules for today's session. Each presenter will be allocated a 7-minute slot for their presentation. I kindly request all the participants to adhere strictly to the time limit. And each student will be prompted at a 5-minute interval, and they will be informed that they have to quickly wrap up their presentation by the end of 7 minutes. The question and answer sessions from the students and audience would be taken at the end of all the presentations. So let's get the presentation started. I would now like to invite Abdul Aleem from Liaquat Institute of Medical and Health Sciences, Thatta, to present his research on effect of sleep duration on academic performance of first-year undergraduate nursing students. Assalamu alaikum to all the respected judges, faculty members, and dear participants. Today, I am very honored to present our presentation under the Medical Undergraduate Research Conference at LUMHS 2025. This year's research theme is From the Bench to Bedside, Translational Research in Medicine. Our research topic is the effect of the sleep duration on the academic performance of the first-year undergraduate nursing student at LUMHS Thatta and PNS LUMHS Jamshoro. This whole study is conducted under the supervision of Victoria Summer Assistant Professor Mr. Shamsuddin. Me, myself, Abdul Aleem, feeling very proud to present on the behalf of my teammates that are Mr. Shiraz, Ms. Savera, and Ms. Uruj. We all are the second-year nursing students at LUMHS Thatta.
Our research background is that adequate sleep plays a pivotal role in supporting neurocognitive functions such as memory consolidation, attention, and executive control factors essential for the academic success. First-year nursing students face unique stressors including rigorous academic demands and early clinical exposures which may compromise their sleep quality and duration. The aim and theoretical rationale. Guided by the self-regulation, regulated learning sleep integration model, this study aimed to examine whether nightly sleep duration predict academic demands, GPA once confounded are accounted for. Adequate sleep should enhance executive functions, planning, self-monitoring, which foster efficient study behaviors and consequently higher academic performance. Objective of our research is to examine the impact of the sleep time duration on the academic performance of the undergraduate nursing student across the multiple campuses of the public sector universities in the Sindh, Pakistan. Methodology of our research is a cross-sectional survey was conducted among the 147 first-year undergraduate students of the nursing at 2 campuses of the Liaquat University Medical Health Science, Jamshoro, Sindh, Pakistan. The data will be collected on the Urdu validated Pittsburgh sleep quality index, and the second one is the K10 psychological distress cycle and the structure lifestyle questionnaire. A student's GPA record will be used to assess their academic performance. The categorical data will be present in the frequency and percentage. Hierarchical multiple regression model will be used to evaluate the independent effect of the sleep duration on the GPA after the adjustment of the age, sex, psychological distress, caffeine intake, and screen time, chronotype, and campus. Conclusion of our research is if the hypothesized situation is confirmed, the finding may support integration of the sleep health education into the student orientation programs and the reconsideration of the early morning classes scheduled to improve the academic performance among the undergraduate nursing students in Pakistan. Recommendations of our research is nursing students should aim for the 7 to 9 hours of nightly sleep to optimize learning and memory consolidation. Academic institutions should incorporate sleep hygiene, education, and into the orientation and wellness programs. Faculty should schedule classes and exams at a reasonable time to reduce sleep deprivation. Students are encouraged to limit coffee, caffeine, and screen exposures before bed to enhance the sleep quality. Peer counseling and wellness centers should offer workshops on the time management to balance the study and rest. Regular sleep monitoring using diaries or apps can help students self-regulate their patterns. Administrators should develop campus policies and discouraging overnight academic overload. Students should practice relaxation techniques, mindfulness, deep breathing to improve the sleep onset. These all are our references. Any question? Thank you, Abdul Aleem, for a wonderful presentation. Our next presenter is Aisha Khalid from Fazaya Ruth Fao Medical College, Karachi, to present a cross-sectional analysis on exploring trends in empathy among medical students in Karachi. Please come forward for your presentation. Assalamu alaikum and good afternoon everyone. I am Aisha Khalid from Fazaya Ruth Fao Medical College. I am a final year medical student. Today, I'll be presenting our research, exploring trends in empathy among medical students in Karachi, a cross-sectional analysis. Medical empathy impacts patient outcomes, yet most research suggests it declines during medical training. Our study challenges this assumption, and I'll share that with you shortly. Concerns over declining empathy have raised questions about the future of healthcare quality. Most existing research focuses on Western contexts, leaving a significant gap in Pakistani data. This lack of evidence highlights the need for targeted research in our local setting. With this in mind, our study
aimed to provide insights that could inform strategies to improve empathy in medical education. To achieve this, we defined some clear objectives: to evaluate empathy levels across different academic years, to explore empathy variations among medical students with different specialty preferences, to investigate gender differences in empathy scores, and to analyze the impact of clinical exposure on empathy among medical students. Here is the methodology of our study. We conducted a cross-sectional study from April to August 24. Out of 500 students, 445 participated, giving us a response rate of 89%. We used Jefferson's scale of empathy, which is a validated tool for assessing empathy in medical education. A pilot study confirmed reliability with Cronbach alpha of 0.85. Data was collected using Google Forms and analyzed using SPSS-22, applying descriptive statistics, t-tests, and ANOVA. Ethical approval was also obtained from the Institutional Review Board of FRPMC. Moving to the results, overall JSE score was 92.01 with standard deviation of 13.42. If you look at the figure 1, which shows the empathy scores by academic year and gender, the yellow line, you will notice that the final year scored the highest with a mean of 94.81, while the second year scored the lowest with the mean of 89.16. This clearly shows that empathy increased as students progressed through medical school, opposite to what most international studies report. Now notice the colored bars. Red is for the females, while the blue is for the males. The female students consistently scored higher than the males with average of 94.98, while male students scored 88.28, giving a difference of about more than 6 points. Now if you look at the figure 2, which compares the empathy scores by specialty preference, you can see that the difference is only of 1 point, which is not a significant finding. Now let's discuss what these results mean. Our findings share some similarities with global literature, such as higher empathy in female students. This is likely due to biological, emotional processing, and social factors. Now the key difference is, unlike Western studies that report empathy decline during clinical years, we observed an increase. This may reflect cultural, educational, or methodological variations. The lack of difference by specialty preference also challenges the belief that patient care fields naturally require higher empathy. This suggests empathy development may depend more on personal attributes and institutional environment than on specialty choice. Further investigations should explore dynamics within specialty choices, focusing on subspecialties and stages of specialty decision making. Now let's sum this up. Overall empathy levels at this institution were lower than international reports, but highest in final year medical students and lowest in second year medical students. Female students consistently scored higher, while specialty choice showed no significant impact. Our study challenges the global assumption of empathy decline and reinforces the need for early empathy training in medical education. Based on these findings, here are some recommendations. We recommend early empathy training in initial years through role-playing, simulations, and reflection. Programmatic changes, including mentorship and communication workshops using digital platforms for interactive learning. Longitudinal studies to monitor empathy trends over time and identify key periods of empathy decline. Before I close, let me acknowledge the limitations. Our study had certain limitations: convenience sampling, which limits generalizability; exclusion of non-responders, which may introduce bias; a cross-sectional design, so we couldn't track changes over time; and also self-reported measures may overestimate empathy. Future research should include longitudinal studies, multivariate analysis,
to assess demographic and experiential impacts and patient feedback for deeper insights. Here are the few references that we used. Thank you so much for your attention. I would be happy to take your questions. Thank you very much, Aisha, for a very well-structured paper. Our next presenter is Masooma Batul from People's University of Medical and Health Sciences, Nawabshah, to present her research on pattern of self-medication and use of prescription-only medication amongst undergraduate students of People's University, Nawabshah. Respected judges, honorable faculty members, and my fellow participants, Assalamu alaikum and good afternoon. My presentation topic is pattern of self-medication and use of prescription-only medication among the undergraduate students at People's University of Medical and Health Sciences for Women, Nawabshah. This is Masooma Batul, student of 4th year MBBS, and my co-author is Khalda Noor, also from a 4th year MBBS student. This study was conducted under the supervision of Dr. Muhammad Siddiq Rajput, Associate Professor at PUMS, Nawabshah. Let's begin by understanding why this topic is relevant. Imagine waking up with a headache or mild fever. What we mostly do, we go reach for the medicine without even calling the doctor. This is self-medication. To use the drugs to treat yourself without any medical supervision. Some illegal drug providers and practitioners exploit self-medication for promoting irrational and potentially dangerous use of the drugs. This study aimed to determine prevalence of self-medication and the use of prescription-only medications among the undergraduate students of PUMS, Nawabshah. Here comes the research objectives. The first, to determine the frequency of self-medication among the medical students. The second, to determine the frequency of prescription-only medication without any medical advice among the students. And the third, to compare the association of prescription-only medication and their academic performance. So after making the objectives, we have made the framework for our research. So this study was a comparative cross-sectional study. The sample size was 660 from the PUMS, Nawabshah. And these were basically divided into two groups, one from the medical side, one from the MBBS, and one from the allied health sciences, which include DPT, pharmacy, and so on. The data collection. Participants fulfilling the inclusion criteria were selected by simple random sampling, and those with chronic illnesses and those who were unwilling to participate were excluded. Then the last, that is data analysis. It was analyzed through SPSS version 25, and to assess the academic performance, we used a validated scale. So after collecting the data, here comes the question, what we actually found. So here are the results. We have summarized our two objectives, that were the frequencies, to determine the frequency of self-medication and prescription-only medication in this figure. So the x-axis shows the medicine items, which include the general medicine and the prescription-only medications. The general medicine include analgesics, antipyretics, while the prescription-only medications include antipsychotics, anxiolytics, and the sedatives. While the y-axis shows the frequency of the students. So here the dark bar represents the medical students, while the light bar represents the allied health sciences students. So from the 660 participants, 270 from the medical students were using the general medicine, compared to the 184 from the allied health sciences. While if we talk about the prescription-only medication, 48 were from the medical students compared to the 17 from allied health sciences. This shows that medical students are frequently using both types of the medication, self-medication and the prescription-only medication. So this may be likely due to their knowledge, or maybe their confidence of self-diagnosing and self-treating. So what about our third objective? That was about the association of prescription-only medication and the academic performance. So this table summarizes the students who were using only prescription-only medications. So from 48 MBBS students, 26 were having the poor academic performance, while
from the 17 allied health sciences, 10 students were having the poor academic performance, while others were in the good and average category. So we analyzed that almost half of the undergraduate students who were using the prescription-only medications were having the poor academic performance. And this was supported by our results that we got the p-value about 0.021, which shows the significant association between the prescription-only medication and the poor academic performance. So now, these were our results. Now let's see what previous results and what our results have the similarities. So Al-Shirani et al., he is from Saudi Arabia, and he stated that self-medication is very common among the medical students. Then we have the Al-Hazmi et al., who reported that 68% of the medical students were using the self-medication due to headache or fever, means like they were using for the analgesics. Then the third, that is Danish et al., and that's finding, and our findings were very similar, because he stated that those students who were using the self-medication for the psychological symptoms, like for the sedations, for depression, for stress, their academic performance have impact, very high impact, and they have cognitive impairment. So do our results says that the students who were using prescription-only medication have poor academic performance. And then there were another authors that, like Yesmo et al. And Area et al. Stated that medical students often lack pharmacological understanding. So that was about discussion. Now let's conclude our whole research in simple words, that the use of medication, self-medication, is very common among the undergraduate medical students. This apparently reflects the knowledge and their confidence. Then self-medication is common practice globally, and the resulting irrational drug is rising concern. So this is not just about the academic, not just about the grades. This is basically going to the public health issue. Like the prescription-only medications have side effects. Their side effects are lack of attention, excess sleepiness, and lack of motivations. So basically what happens, those students who were doing this, they were lacking the confidence in their studies. So, and in our studies that we have seen that there are so many students having suicidal tendencies. So means there is a strong relation between them. So we have some recommendations that there should be proper legislation and the maintenance for prescription-only medications, and there should be the motivational counseling for the students. And in last, I will conclude, these are the references, and in last I will conclude, a pill without guidance today, a prescription without wisdom tomorrow. It's time to rethink self-care. Thank you so much for attention. Thank you, Masuma, for a very well-delivered presentation. Our next speaker is Fakhra Siddiq from Muhammad Medical and Dental College, Ibn Sina University, Mirpur Khas, to present her research on practice and attitude of informed consent in daily life among medical and dental students. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Fakhra Siddiq, final year MBBS student, Muhammad Medical and Dental College. Today the topic of my research is practice and attitude of informed consent in daily life among medical and dental students, Ibn Sina University. Introduction. Informed consent is a cornerstone of ethical decision making in everyday life. It ensures that individuals are fully aware of implications, risks, and benefits of any action or decision they participate in, whether in medical procedures, legal agreement, or even routine interactions. Rational, the practice and attitude toward the informed consent in daily life are essential for fostering transparency, trust, mutual respect, interpersonal and professional interactions. Objective: to find out the prevalence of practice and attitude of informed consent among dental and medical students of MMDC and Ibn Sina University. Methodology: the study design was cross-sectional study. Study setting was students of MMDC and Ibn Sina University. Study duration was conducted from March to September 2024. Study population was MBBS, BDS, deputy students of MMDC. Method of data collection was questionnaire distribution, statistical analysis by SPSS version,
2022 and ethical approval by Ethical Committee of MMDC. So results, 37.14% male and 75.78% female reported that they are aware of term informed consent. 52.2% male and 53% female reported that they have knowledge about the informed consent. 43.8% male and 50.5% female reported that importance of practice of informed consent in their daily life. 55% male and 47% female reported that informed consent is very important in daily activities and interactions. 61% male and 44% female agree that informed consent respects the individual's autonomy. 39% male and 45% female agreed that informed consent is more of a legal formality than practice of ethical significance. The necessity of informed consent was highly appreciated in the medical procedure, which was 88%, in decision making and conducting research was 90%, personal data was 59.5%, and university course was 85.5%. 57.1% male and 63.1% female reported that they do not have been asked about informed consent in any non-medical circumstances. 46.6% male and 45.2% female reported that they feel confident in their ability to give the informed consent. 33.3% male and 28.4% female reported that they feel complexity of information while giving the informed consent. 81.9% male and 82.1% female reported that there should be prominence of informed consent in university curriculum. 41.9% male and 33.6% female reported consent is sometimes challenging in language barrier and culture differences. 68.5% male and 55.7% female agreed that consent protects the individual autonomy in ethics. So, conclusion, the majority of the medical students have awareness about the practice of informed consent in their daily life, but the female and the urban population get the more importance of the informed consent in their daily life. The participants agree about the necessity of the informed consent is highly appreciated for the medical treatment in decision making, conducting research, personal data, and university courses. Here are the reference. So recommended that the informed consent be treated as a clear, respectful, and ongoing communication process. Individuals should receive all necessary information in simple, understandable language, including the purpose, risk, benefits, and alternative to proposed intervention and the study. Thank you so much. Thank you, Fakhra, for a very clear and concise presentation. My next speaker is Rao Ali Zaman Khan from Liaquat University of Medical and Health Sciences, Jamshoro, and he's going to present his research on digital overload, impact of prolonged screen time on sleep deprivation, cognitive function among third-year medical students at LUMHS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, esteemed faculty members and fellow colleagues. I am Ali Zaman from third year MBBS, and I am honored to be here to present our research at this conference, which is conducted at the LUMHS. Now, before we begin, I want you to imagine a medical student that is doing doom scrolling all night before going to sleep, and when he wakes up and attends lectures and tries to study, what would be the consequences of the doom scrolling? Yes, exactly. Brain fog, forgetfulness, and decreased attention span. That is exactly the topic of our discussion here. There is a digital overload, impact of prolonged screen time on sleep deprivation and cognitive function. Now, briefly explaining the background of our research, we know that we are living in a digitalized era where screen-based learning is essential for medical students, whether it's taking the lectures online or reading the PDFs. And we know that it is a proven fact that the blue light emitted by such devices can suppress our melatonin, which disturbs our sleep and causes sleep deprivation, which ultimately causes the impairment of the cognitive functions like attention, memory, and learning, which are the critical functions for a medical student. Now, despite the global concern, there is a very limited research that exists in our country of Pakistan. Our study explores the relationship more on this topic, how the sleep deprivation is affecting the cognitive functions.
Now, let's take a look at the objectives. Our first objective was to examine the relationship between screen time before going to the bed and the relationship with the sleep deprivation among the third-year MBBS students. And the second objective was to assess how the sleep status is affecting our cognitive functions. Now, moving on to the research methodology, we performed a cross-sectional study for about 3 months and collected data for about 184 MBBS students. We used a simple random sampling with inclusion criteria of the 30 MBBS students at LUMHS and excluding the non-MBBS students and with any sleep disorder and excluding the factors like caffeine and stress. For the data collection and to assess the sleep quality, we use the Pittsburgh Sleep Quality Index, which is a validated self-report based questionnaire. And to assess the cognitive function, we use the gold standard test of the psychomotor vigilance task, or the PVT for short. Now, the following graph is showing the demographic profile of our research. This is showing the ratio of the male and female and the hostelers versus the day scholars. Now, in the above pie chart, as you can see, the following 20% of the students were using mobile phones for about 2 hours before going to sleep, and about 38% of our students were using mobile phones for about 2 to 4 hours before going to sleep, and more than 40% of the students were using mobile for more than 4 hours. Now, in the below pie chart, as you can observe, more than 77% of the students were actually considered to be sleep deprived. Now, in the following A figure, as you can see in the red bar, the reaction time of the sleep deprived students were much higher as compared to the students who are not sleep deprived. Now in the B figure, as you can see, which is showing the comparison of the screen time versus sleep deprivation, and in the following, this third one, red bar, as you can see, the students who were using mobile for more than 4 hours before going to the bed had much higher reaction time as compared to those who were using mobile phones for much less hours. Now, talking about the discussion, our study reinforces the idea there is a direct correlation between the prolonged screen time, sleep deprivation, and cognitive impairment. There are also several other literatures that exist that also suggest that there's a negative correlation with the sleep deprivation and early cognitive impairment, which also suggests the idea that the chronic sleep deprivation can also lead to the increased risk of the several neurodegenerative diseases as well. Now, coming to the conclusion of our study, our findings will reveal a clear association between excessive digital exposure, poor sleep quality, and neurocognitive decline in the academic group. Now, it is recommended that we should try to regulate our screen time and promote a healthy sleep hygiene, and it is also suggested to expand the topic to include the factors like stress and to assess its impact on cardiovascular, musculoskeletal, and neurological health as well. Now, the findings were valuable, but it is also important to acknowledge the limitations as well. Our first limitation was the self-report bias, and the second one was the limited generalizability because this study was only conducted at the LUMHS, and the third one was the short duration of study, so it's hard to assess the long-term effects of the sleep deprivation. And our last limitation was the sample size constraint. While 184 sample size is a respectable sample size, but it still could be underpowered. Now, these are the references that we consulted. Now, if you allow, we have a short video that explores the topic. Now at the end, I would like to thank you, our worthy supervisor, Dr. Javelia Hamid. Thank you. And this podium is now open for any queries. Thank you so much. Thank you very much, Rao Ali Zaman. It was a very interesting research. Our next presenter is Arisha from Indus Medical College, Tando Mohammad Khan, and she'll share her research work on social media usage by children and adolescents and its effect on their academic performance. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Arisha, daughter of Imdad Ali, second year MBBS student from Indus Medical College, the University of Modern Sciences, Tando Mohammad Khan. So,
First of all, thank you very much for giving me an opportunity to draw your kind attention. So, the title of my study is The Impact of Social Media on the School-Going Children and the Adolescents and their impact on their academic performance. So, the contents of my presentation are background, rationale, objectives, methodology, results, discussion, conclusion and recommendation, limitations and future direction, and the references. So, the background of my study is, as we are living in the digital era and nowadays the social media is seeking the attention of every young adult. Either it's a student, either it's an adult, or either it's a medico. So, studies highlighted that in COVID-19, there was increased the use of social media. The rationale of my study is, this research is based on self-reports, aims to explore how social media usage affects the academic performance of children and the adolescents. Objectives are to determine the socio-demographic profile of the participants using social media, and the second is to assess the effect of social media usage on academic performance of study participants. Methodology. Methodology includes the study design and the study setting, that is community-based comparative cross-sectional study. Study population was school-going children and the adolescents, that's age group is between 10 to 19 years. The students whose age is less than 15 years, their respondents were their parents or their guardians. The sample size is basically the 82 subjects were selected by snowball sampling and their respondents were their parents or their guardians. Data collection tool and data analysis. So the data collection tool includes the questionnaire that was basically related to their daily screen time, their academic performance, and the platforms that they use the most, and the data analysis was done in the SPSS version 28.0. The results. Now, I'm going to summarize the results in which the 45.2% participants were social media belonged to the age group 17 to 19 years old, with male 53.1% males against 46.9% females. And the daily average screen time is more than 5 hours, that was reported by 37% of the participants. The YouTube was used by 50.6% of participants, and the 63% of the participants using social media opined that the ability of critical thinking was affected badly. Now, these are some charts that are showing that they are basically summarizing the most used platform and the participation of the candidate, that is 46.9% females and the 53.1% are males, and the lower chart is showing basically the screen time that was used by them. Now the discussion, basically this study and the study that was made in Iran, the 57.7% of the children were using the social media. Researches conducted in the Bangladesh and India, 89% and 76% of the participants were using social media, in which 67% and 53% of the participants were badly affecting their academic performance. The social media overusage has a negative implication on academic performance and a student as a whole. Conclusion and the recommendations. My conclusion is the present research demonstrated that social media usage affect the academic performance, which need to be addressed. And the recommendations are, student awareness programs are suggested regarding limiting screen time, and the students should be better trained to enhance their academic-oriented usage of social media. Limitations and future directions includes, the study relies on self-reported data on a limited sample size, which might affect the generalizability of the results. Future implications are, more broad-based studies with similar objectives on larger sample size can be made to highlight the real association between social media usage and the academic performance. So basically, these are the references that I take and used in my research. And thank you very much. Thank you, Dr. Arisha, for a well-drafted research.
My next presenter is Preh Abdul Sattar from ISRA University, Hyderabad, and she is going to present her research on prevalence of primary dysmenorrhea in undergraduate female students. Assalamu alaikum and good afternoon. My name is Preh Sattar and today I'm honored to be presenting author of this research, Prevalence of Primary Dysmenorrhea and its effect on the social life of undergraduate female students. This research is compiled by 5 students, Sanobar, Zoha, Jia, Sneha and including me. The primary reason for choosing this topic is that dysmenorrhea is very common among female, often caused by hormonal imbalance and elevated prostaglandin, which leads to severe uterine contraction. Other symptoms include nausea, abdominal cramps, body ache, and mood swings. Dysmenorrhea often results in delayed work, decreased productivity, and mental and physical distress. The main reason for choosing this topic was to enlighten the authorities that how dysmenorrhea affects a woman's productivity, flexibility, and focus, leading her to fall behind in the academic commitments. Countries like Spain, South Korea, and Indonesia offers 2 days leave to women per month. The main objective of our research was to assess the prevalence of primary dysmenorrhea in undergraduate female students and generally how it affects their social life and what challenges she can come across while trying to assess their rightful leaves and their mental and physical health status. The methodology of our research is that this was a cross-sectional study carried out on undergraduate female students, 200 undergraduate female students. Data was collected through a close-end questionnaire and analyzed accordingly using Google Forms. This is our result. 71%, there is a prevalence of dysmenorrhea among the 71% of females. I will just concise it in the pie chart. As shown in the first pie chart, that prevalence of, as shown in the first pie chart, 83% participants want awareness campaigns on dysmenorrhea, and dysmenorrhea affected 67% concentration, among which 35% were severely affected and 3% were mildly. And in the first pie chart, you can see that 40% agreed for granting leaves to the females every month, whereas 45% participants said that females should be granted leave when there are severe symptoms. In the conclusion, that dysmenorrhea is very common and causes significant academic and psychological stress. So, in the light of our research, it is recommended that policies should be made and emphasized upon all institutes as they are implemented in many parts of the world. We urge authorities of Pakistan to make policies in the favor for granting 2 days leave to women every month and take other appropriate measures also. For the limitations, we just make the questions, collecting samples and compile them in 250 words. For the future directions, we want that there should be awareness campaigns on the cause and the management of primary dysmenorrhea should be introduced in schools, colleges and universities. And also there should be a contrasting features and signs and symptoms between primary and secondary dysmenorrhea. And these are the references that we use. And thank you. Any questions? Thank you, Preh, for an insightful presentation. Now we have the last presentation of today's free paper session by Ali Hassan Palijo from Bilawal Medical College, and he will present a research on association between dietary habits, sleep patterns, physical activity and obesity among medical students. Assalamu alaikum everyone and very good afternoon. I, Ali Hassan Palijo, a third-year MBBS student at Bilawal Medical College, LUMHS. Today I am here with the topic, the association between dietary habits, sleep pattern
physical activity, and obesity among the medical students. Let me introduce my topic, obesity. Obesity is becoming a global health concern, and previously it was mostly seen in developed nations. But due to urbanization and lifestyle changes, now it is also seen in underdeveloping countries. According to statistics of 2005, approximately 23% of the global population were overweight and 9.8% of the global population were obese. And the recent WHO statistics of 2022, approximately 43% global population were overweight while 16% were obese. And the projected statistics for 2030, the 38% of the global population were overweight and 20% will be obese. Now moving towards the background of our study. Obesity is not just a cosmetic issue, but it is influenced by genetics, behavioral and environmental factors such as unhealthy diets, sedentary lifestyle and poor energy balance, with increasing a risk of cardiovascular disease, diabetes, chronic respiratory disease and cancers. This problem is rapidly growing in Pakistan, and the medical students are especially at high risk due to academic stress, irregular eating habits and reduced physical activity. The aim of our study was to determine the prevalence of obesity among the medical students and to explore the relationship between dietary habits, sleep pattern and physical activity with body mass index. Moving onwards to the methodology, a cross-sectional study was conducted at LUMHS Jamshoro, and the data was collected by using survey-based structured questionnaire, and then the data analyzed in SPSS latest version with t-test and chi-square test, and the p-value 0.05 was considered statistically significant. So the results of our study came out as here the BMI 23.5 kilogram per meter square. Look at here the bar chart. The 7% of the students were obese and the 20% were overweight, 62% were normal weight and 11% of the students were underweight. And obesity was more prevalent in males as compared to females. The study found a significant association between physical activity and obesity, as a student with normal weight reported that the exercising more regularly as compared to those who were obese. The dietary habits also show a strong association with obesity, and the overweight student consumed more fast food than the normal weight. In contrast, no significant association was observed between the sleep pattern and obesity, although obese students shows irregular sleeping less than 6 hours or more than 8 hours. The results are consistent with international literature. A study from Greece reported that the 40% male and the 23% female medical students were overweight or obese. Another South Asian studies also highlight that the male students are more prone to obesity than the females. The physical inactivity has been identified as a major contributor to obesity, with reduced energy expenditure playing a bigger role than excessive food intake. Similarly, a frequent consumption of fast food has been associated with obesity and insulin resistance. Now moving towards the conclusion of our study, the obesity and overweight are growing concern among the medical students. The male medical students are at higher risk. The low physical activity and fast food consumption has strong links to the obesity, while a sleep pattern shows no significant role in this study.
So we need to promote healthier lifestyle for future doctors. And lastly, we have recommendations and limitations. There is a need to promote health awareness programs in the medical colleges. The initiatives such as encouraging regular physical activity, limiting fast food consumption, organizing stress management workshops, and routine body mass index screening can be beneficial. The medical students should be guided to adopt healthier lifestyle as they will serve as a role models for the community in the future. This study has certain limitations. It was conducted at a single institution with relatively small sample size. So the findings may not represent the all medical students in Pakistan. Moreover, as it was a cross-sectional study, it can only show the association rather than establish cause and effect relationships. Here are the references of the study, and thank you. Thank you, Ali Hassan, and that was a commendable effort. Now that all the presenters have shared their work, we'll open the floor for question and discussion. I request the students to direct any questions to the presenters. Assalamualaikum. Although the question was directed for the students, so considering myself as a student, so my question is for Masooma. Dr. Masooma Batul. Masooma, wonderful presentation, and the way you presented it was really good. I have just one question here. In your research, self-medication group was consuming analgesic and antipyretic, correct? Right. So how do you link, as a research, how do you link antipyretic and analgesic with their declining academic performance? So that have a question in my mind. Sir, can I answer in Urdu? Oh yes, of course, बिल्कुल. सर बेसिकली सेल्फ मेडिकेशन का और एकेडमिक परफॉर्मेंस का रिलेशन नहीं था. प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिकेशन विदाउट मेडिकल एडवाइस और एकेडमिक परफॉर्मेंस का था. तो उसमें हमारे पास सेडेटिव्स, एंटीसाइकोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स आ गए. थैंक यू. अच्छा, उसमें भी फर्दर क्वेश्चन है कि डिड यू इवन सेग्रीगेट के कौन सी ड्रग्स ज़्यादा कंज्यूम हो रही थी, कौन सा ग्रुप ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था? सर हमारे पास जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, क्योंकि एकेडमिक परफॉर्मेंस की वजह से स्टूडेंट्स में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, तो वो एंटी सेडेटिव्स की जगह वो एंटी डिप्रेसेंट्स उसमें ज़्यादा देखा गया. वो हमारे आर्टिकल में रिजल्ट में मेंशन. नाउ क्लियर टू मी. थैंक यू सो मच. Thank you very much, sir, for your question, and thank you, Masooma, for your prompt response. So, today's session has been a testament to the fact that learning does not end in the classrooms alone. It thrives in research, curiosity, and courage to present ideas. I sincerely hope that this platform continues to inspire more students to contribute to the scientific advancement. Before we move to the certificate distribution, I would like to request our respected chairs to kindly share their concluding thoughts. Professor Mohammad Sohail and Professor Saifullah Jamro and Professor Sarwar Qureshi for their concluding remarks. Assalamu alaikum. Almost very nice presentation by almost 99% of the students. They have worked hard, as well as their supervisors have also worked hard. It was difficult for us to give the position for any, it was difficult work. But above all, I will give one suggestion that from the next year, the Indus Medical College, the college from the Mirpur Khas and from Nawab Shah, ISRA, they should take the lead to organize this MURC 2026 or MURC 2027. So every college, every university should have contribution in this research studies. And thank you very much. Assalamu alaikum. First of all, I congratulate all presenters. It's not a matter of winning or defeat. It's the presentation. You are here on the stage. You have presented your paper. And this shows your commitment towards the research. And the stage provided by LUMHS is very good. Many of the young students, classes of all MBBS, BDS,
and nursing all are participating. So if we announce even the result, don't take it hurts. You have done well, all of you are successful. Thank you. Thank you, sir. Sir? Thank you. I'm Professor Mohammad Ali Suhail from PUMS, represent the PUMS, but I am the student of the LUMHS. क्योंकि जहाँ पर इस वक्त बैठे हैं मेरे कोलिग्स यहाँ बैठे हैं, मेरे क्लास फेलोज भी यहाँ पे आपके सीनियर्स. If the round of applause for your seniors, which supported you, and a round of applause for my jury, honorable jury, and wonderful organization, Director Academics. I think he has left somewhere. After LUMHS, round of applause for your captain of team, and wonderful presentation by the presenters from the Mohammadi Medical College, LUMHS, ISRA, PUMS, and Indus Medical College, Bilawal Medical College, even from the Karachi. It's a big step. When I become the principal of my university, then I started that undergraduate should involve from first year to third year in the poster presentation, and fourth year and final year for the research publication and all these things. Because undergraduates, if you people are not involved in the research, nowadays if all the candidates are proceeding towards the USMLE, all those things, all over the world, research at the undergraduate level is very much meaningful and help in your matches at the different level of the world. So we found a wonderful presenters over here. All of you are successful. बहुत मुश्किल काम आपने जूरी को दिया है कि हम किसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड करें, लेकिन you all are the winners, and I think my honorable jury has finalized first, second, third. Okay, आप लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि we will announce on the Sunday. तो भले आप लोग थोड़ा सा टेंशन में रहें, और सब के सब winners हैं. We all congratulate. Thank you. Thank you very much, professors, for your kind words. We have an announcement that the winners will be announced in the concluding session tomorrow. We now move to our certificate and shield distribution ceremony. I request Professor Munawwar Alam Ansari, who is the Dean of Basic Sciences, Professor Moin Ahmed Ansari, who is the Dean of Medicine and Allied, Professor Ashok Kumar Narsani, who is the Dean of Surgery and Allied Sciences, and Professor Feroz Ali Kalodo, who is the Dean of Dentistry and Allied Sciences, to please come on the stage. I would also request our respected chairs to please come forward for the certificate distribution. Professor Sarwar Qureshi, Professor Saifullah Jamshoro, and Professor Muhammad Sohail. Now I request each of our student presenters to come forward one by one to receive their certificates of participation. Abdul Aleem from Liaquat Institute of Health Sciences, Thatta. Abdul Aleem from Liaquat Institute of Health Sciences, Thatta. Aisha Khalid, Fazaya Ruth Fao Medical College, Karachi. Masuma Batul from People's University of Medical and Health Sciences. Fakhra Siddiq from Muhammad Medical and Dental College, Mirpur Khas. Rao Ali Zaman Khan from LUMHS. Arisha from Indus Medical College. Sanobar Zulfikar from ISRA University, Hyderabad. Ali Hassan Palijo from Bilawal Medical College. I now request please give them a round of applause to all the students. They all are truly winners. I now request Professor Munawwar Alam Ansari to present a shield to Dr. Muhammad Sohail as a token of appreciation.
I now request Professor Moin Ahmed Ansari to please present the shield to Dr. Saifullah Jamshoro. I request Professor Feroz Ali Kalodor to present shield to Dr. Sarwar Qureshi. Now it's my turn to receive my shield from Professor Ashok Kumar as a moderator of this event. Thank you very much, ladies and gentlemen. I just want to acknowledge the efforts of my team, my two residents, Dr. Osama and Dr. Mehran, who has facilitated these two sessions very nicely. So they deserve a round of applause. Thank you very much. With this, we conclude today's session of the conference. On behalf of the organizing committee, I extend my sincere gratitude to all the distinguished chairs, moderators, presenters, panelists, and vibrant audience for making today a success. We look forward to welcoming you all again tomorrow for the next sessions. Faculty members, you are requested to please move towards DME for the lunch, and students, you may proceed towards the lobby for the lunch. You will receive lunch after showing the lunch coupons. Thank you so much. Allah Hafiz.